पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एज अ पाइथन डेवलपर यू शुड नो कि हाउ पाइथन इज पोर्टेबल and how Python is platform independent language. So this is what you will learn in this video, ki how Python is portable and how Python is platform independent. This section, there are two topics. Okay, this is pretty important interview questions. Python is portable. Okay, this is one concept. And second concept is Python is machine independent. इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा इंटरव्यू में। मशीन इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, सो इफ आई से पोर्टेबल, पोर्टेबल का मीनिंग होता है कि सोर्स कोड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई पाइथन में कोड लिखा, test.py, ठीक है, आपने मान लो विंडो में लिखा, ठीक है, और इस सोर्स कोड को हम लोग विंडोज से लाइनक्स में मूव कर सकते हैं, या इस सोर्स को हम लोग विंडोज से मैक में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर if we are able to do this, if we are able to move the source code from one system to another system, and we are able to run the source code into different system, then it is called portable. Let's suppose मैंने विंडो पर कुछ कोडिंग किया, ठीक है, मैंने सोर्स कोड लिखा, ठीक है, मैंने अब विंडो पर उसको रन भी कर दिया, ठीक है। अब इस सोर्स कोड को विंडोज से मैं मैक पर उसको मूव कर सकता हूँ, सेम सोर्स कोड को, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी एडिट, विदाउट एनी चेंज। वी टेक द सोर्स कोड फ्रॉम विंडो एंड वी मूव द सोर्स कोड इनटू मैक ओएस, okay, and we are able to run the same source code without any change. तो source code को we can easily move it from one system to another system. So this concept is called portable. Okay, so Python is a portable language. Even C is a portable language. Even Java is a portable language, because we can easily move source code written on one system to another system without any change, without any problem, and still we can run that source code into different platform on different system. So this concept is called portable. This is pretty much simple. Okay, so Python is a portable language. C is a portable language. Okay, this is one concept. Second concept is called platform independent. Okay, platform independent or machine independent. Okay, so Python is a platform independent language. Okay, just like Java is also a platform independent language. Python is a platform independent language, but C is not a platform independent. ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन सी एंड पाइथन। सी क्या होता है, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है, एंड पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं डिकोड करता हूँ कि हाउ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाउ सी इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। You getting confused, or you still okay? Portable is different thing and platform independent is different thing. Both language, Python is portable and Python is again platform independent. Dono these two concepts apply for Python, but you have to understand ki how Python is platform independent and how C is not platform independent. Yeah, review how Python is platform independent, how, what makes them platform independent. Okay, so see, you are pretty much aware that we have operating system. Okay, let's suppose this is my operating system. So in order to understand that concept, you have to understand this diagram. Okay, we have operating system. Okay, and in I told you here, I can see this diagram. You go to previous diagram. Okay, so we use interpreter. In the Python case, we use interpreter or we use Python virtual machine. Okay, so what we do in case of Python, on top of operating system, we install Python virtual machine. Okay, so here on top of OS, we have another layer which is called Python virtual machine, which is called PVM. Okay, short mein PVM.
ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पीवीएम सेट करता है, ठीक है। और पीवीएम का मेन काम क्या होता है, उसको इट कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इट्स प्रोड्यूस व्हाट, इट प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज। ठीक है, so this is the output of pvm, it converts you, it gives you machine language. Okay, this is in case of python. In case of c, मैं थोड़ा यहाँ पर कंपेयर करना चाहता हूँ, okay, between c and python I want to compare, that's why I'm putting giving example of c. So let's suppose in case of c में क्या होता है, this is again operating system, okay, but in case of c there is no any virtual machine. ओके, सी में कोई वर्चुअल मशीन नहीं होता है। सी में क्या होता है कि ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ओनली कंपाइलर होता है, और कंपाइलर क्या करता है, दे प्रोड्यूस द मशीन लैंग्वेज, यार दे विल प्रोड्यूस द मशीन लैंग्वेज। तो बीच में जो पीवीएम का जो रोल है वो सी में नहीं होता है। सो दिस इज योर पाइथन लैंग्वेज, दिस इज पाइथन केस, and this is C case or C++. This is C or C++. Okay. Okay, so this is the real difference between Python and C++. So in case of Python, we have a PVM, virtual machine, but in case of C++, we don't have any layers, any virtual machine. Okay, so what happens, how it is platform independent? That is my question. Okay, so let's suppose I have two operating system. Let's suppose this is my, let's suppose first this is my window. Okay, this is my window system. Okay, and same thing. So यहाँ पर I want to explain how Python is machine independent or platform independent. ठीक है, this is my intention to explain you. ठीक है, if I say machine independent और platform independent, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने विंडो पे कुछ काम किया, ठीक है, मैंने विंडो पर एक पाइथन कोड लिखा, ठीक है, और उस कोड को मैंने एक बाइट कोड प्रोड्यूस किया ऑन विंडो फ्रॉम वर्चुअल मशीन, आई प्रोड्यूस बाइट कोड, ठीक है। अब इस बाइट कोड को मैंने रन कर दिया अपने ओएस पर, ठीक है। अब इस बाइट कोड को आई कैन टेक दिस बाइट कोड on any platform, let's suppose Linux, okay, and this bytecode I can run. Okay, let me put one more example shape here. So the PVM, it gives you bytecode. Means .pyc can be moved. .pyc. Yes, yes. So this is your pyc file. Extension is .pyc. pyc. Okay, bytecode. Okay. So PVM क्या करता है? It produce the bytecode. Okay, and from this bytecode it produce the machine language, which any OS can understand. ठीक है. तो लेट्स सपोज कि आप विंडो पर काम कर रहे हो, ठीक है, एंड विंडोज सिस्टम पर आपने पीवीएम इंस्टॉल किया है. सो ओनली थिंग हियर इज ओनली हैक इज हियर द पीवीएम, योर वर्चुअल मशीन, ठीक है. तो एवरी प्लेटफॉर्म पर लाइक विंडो पर आपको पीवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड लाइनक्स पर आपको पीवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. सो ओनली थिंग डिफरेंस इज द पीवीएम. सो मान लो कि आप विंडो पर काम करो, यू सपोज यू वर्किंग ऑन विंडो, यू हैव इंस्टॉल पीवीएम ऑन विंडो, वर्चुअल मशीन ऑन विंडो, and this pvm will produce bytecode. Okay, and this bytecode, this pvc file, this bytecode you can take from window to Linux, inside Linux. Okay, same bytecode. Okay, you are not changing any bytecode. Okay, bytecode same रहेगा, ठीक है. आपने प्रोड्यूस किया bytecode कहाँ पर, पहले विंडो पर, ठीक है, with the help of pvm, ठीक है. Same bytecode you can move from window to Linux machine, same bytecode, no change, and this bytecode will be produced into machine language by pvm and it can run on the Linux, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या होता है, यू आर फ्री टू मूव द बाइट कोड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. If you're able to do this,
then you say you can claim that language is a machine independent language. तो ये होता है only because of PVM. अगर मान लो PVM नहीं होता, अगर मान लो वर्चुअल मशीन नहीं होता, then it is not possible. For example, in case of C, ठीक है, in case of C, you can see here there is no PVM concept, there is no virtual machine. ठीक है, तो C में क्या करते हैं कि हम लोग अपना कोड लिखें, जो भी सोर्स कोड है उसको कंपाइल किया, तो कंपाइल करने से हमको डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज बन गया, डायरेक्ट, देयर इज नो बाइट कोड कन्वर्शन. अब इस मशीन लैंग्वेज को क्या, जो मशीन लैंग्वेज होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. ठीक है, द मशीन लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस, दैट इज ओनली फॉर दैट प्लेटफॉर्म. जैसे मान लो कि मैंने विंडो पर काम किया, मैंने विंडो पर मैंने सी को कंपाइल किया विंडो मशीन पर, तो जो मशीन लैंग्वेज बना, प्रोड्यूस हुआ, वो ओनली विंडो अंडरस्टैंड कर सकता है. इस मशीन लैंग्वेज को आई कैन नॉट मूव टू एनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म और लाइनेक्स प्लेटफॉर्म. तो मशीन लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है. तो सी के केस में, बिकॉज देयर इज नो पीवीएम, देयर इज नो वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली जस्ट वन स्टेप, और ओनली द कंपाइलेशन स्टेप. So C produce machine language, and this machine language I cannot move to any different platform. So that's why C is not a platform independent. C is always a platform dependent language. एक बार आपने मशीन लैंग्वेज प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट मशीन लैंग्वेज कैन नॉट मूव टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म. The advantage is that of having virtual machine is that you can easily move, you can just write once, okay, and run everywhere. This is the concept, okay, write once and run everywhere, okay. So we don't have to make any change, right? हम लोग मान लो कि मैं विंडो पर मैंने राइट किया अपने कोड को, उसको मैंने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, और I can run on any platform. Let's suppose my server, my production is on Linux server, okay. My development environment is on Window. मैं विंडो में डेवलप कर रहा हूँ, बट मैं उसको रन कर रहा हूँ लाइनक्स में. ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली इन प्रोडक्शन सिस्टम ऑल द सिस्टम्स आर लाइनक्स बेस्ड. ठीक है, विंडो बेस्ड नहीं होता है, बिकॉज लाइनक्स इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू विंडो. सो ऑल योर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जितने सर्वर्स होते हैं, ऑल आर लाइनक्स बेस्ड. तो हम लोग एज अ डेवलपर हम लोग विंडो में डेवलप करते हैं, बिकॉज विंडो सस्ता होता है. तो एज अ डेवलपर वी डेवलप इन विंडो, बट आवर कोड इज रनिंग ऑन लाइनक्स सिस्टम. सो राइट वंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट वंस रन एवरीवेयर. तो एक बार लिखो और उसको सब जगह रन करो, कहीं कहीं भी रन कर सकते हो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यू कैन राइट वंस एंड रन एवरीवेयर.